Welcome back, guys. अब हम करेंगे current electricity and DC circuits. Question 16, paper 2, 5054. Let's start. Question 16. A student connects a thermistor in series with a battery and an ammeter. He uses the resistance of the thermistor to determine the temperature. Thermistor क्या होता है? Thermistor is the type of resistor that reacts upon the temperature around it. It will react upon what the temperature is and accordingly जो temperature होगा उसके हिसाब से इसकी resistance होगी. ठीक है ना? In the space below, draw a diagram showing the thermistor, the battery and the ammeter. So सबसे पहले हमने बना लिया बैटरी. ठीक है ना? बैटरी से हमने एक लाइन एक्सटेंड की और हमने एक एमीटर बना लिया. एक एमीटर से लाइन एक्सटेंड किया and we have made a thermistor. This is a very simple and easy graph. I mean circuit. आप इसको very easily बना सकते हो by the requirements. The thermistors in series with battery and ammeter. और जो ammeter होता है that is always in series and the thermistor होता है उसका sign ऐसे होता है it is a fixed resistor with two lines. ठीक है ना? So having that said, आगे चलते हैं. The student places the thermistor in the water at various temperatures and records the readings on the ammeter. As we can see, the current is increasing, therefore the resistance is decreasing. The resistance decreases as the temperature of the thermistor increases because they are inversely proportional. अगर temp increase होगा तो resistance decrease होगी. ठीक है ना? So as simple as that. आगे चलते हैं. The potential difference across the thermistor remains constant. The potential difference is staying constant while the current and resistance is changing. The relationship between current and resistance is inversely proportional. That means if the resistance is decreased, the current will increase. If the resistance is increased, the current will decrease. And in this graph, we can see the resistance is decreasing because the current is increasing. The resistance of the thermistor is 240 ohms at a temperature of 20 Celsius. 20 Celsius पे इसका जो resistance है that is 240 ohms. Using figure 11.1, calculate the potential difference across the thermistor. The potential difference across the thermistor when the thermistor has a value of 240 ohms will be calculated using two values. The two values will be the value of the resistance which we have been given straight away and the value of the potential, the value of the current. और जो current की value हो we can calculate that using the graph. ठीक है ना? वो हम ऐसे निकाल लेंगे. तो as we can see तो ये 1 2 3 4 5 हो गया है. So that means it is 0.05 amperes is the current. And हमारे पास resistance कितनी है? 240 ohms. So we can simply apply the formula V is equals to IR. I हमारे पास 0.05 है into R हमारे पास 240 है. 240 into 0.05 will be equal to 12 volts. 12 volts will be the answer. अच्छा आगे. 2. The resistance of the thermistor at the temperature of 40 degrees Celsius. So at 40 degrees Celsius, what will happen is कि हमारा जो है current that will drastically increase because the the temperature is increasing, the current will increase as well and the resistance will decrease. तो हम इसका देख लेते हैं. ये आ जाएगा 0.12. 0.12 करंट इज इक्वल टू 0.12 और हमारे पास आ गया वोल्टेज विच इज इक्वल टू 12, राइट? तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है वोल्टेज एंड करंट की. वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट द रेजिस्टेंस विल बी. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V is equals to IR. Resistance will be equal to voltage divided by current, right? तो हमारे पास करंट 0.12 आ गया है which will be equal to 100 ohms will be the resistance. ठीक है ना? 100 ohms will be the resistance when the temperature is 40 degrees Celsius. आगे, this is the interesting part.
The resistance of the thermistor is 240 ohms. ठीक है ना, at a temperature of 20 degrees Celsius and 48 ohms at a temperature of 60 degrees Celsius. The resistance of the thermistor does not change linearly with the temperature. Describe how the resistance of 20, 40 and 60 show this is true. अच्छा, पहले हम थे 20 डिग्री सेल्सियस पे. 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या था रेजिस्टेंस? इट वाज 240 ओहम्स एट 20 सेल्सियस. फिर हम आगे गए, आगे हमने इंक्रीज किया लीनियरली, ठीक है ना, लीनियरली हमने इंक्रीज किया टू 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वोल्टेज आई मीन रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, आई मीन ओहम, सॉरी. और आगे फिर हमने किया 60 डिग्री सेल्सियस पे. 60 डिग्री सेल्सियस will give us a value of resistance which is 48 ohms. ठीक है ना, 48 ohms हो गई हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू. एज वी कैन सी, हर दफा जब हम इंक्रीज कर रहे हैं व्हाट यू कॉल इट, द टेम्परेचर को, देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस का लीनियरली इंक्रीज हो रहा है इन टेम्परेचर. तो यहां वी कैन सी अ सीक्वेंस कि इधर 20 प्लस हुआ है और इधर भी 20 प्लस हुआ है, राइट. बट इन द चेंज इन resistance there is a irregular change, there is a unlinear change. पहले डिक्रीज हुआ है 140 डिग्री 140 ओहम्स का, और उसके बाद डिक्रीज हुआ है 52 ओहम्स का, राइट. दैट मीन्स देयर इज अ unlinear change in resistance while there is a linear change in temperature, right. To describe how the resistance of the thermistor, the resistance of the thermistor does not change linearly with the temperature. अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि the temperature's value is linearly increasing with an increment of 20 degrees Celsius by each passing point, while the resistance is increasing at a pace, at an irregular pace. ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन चेंज, टू इक्वल चेंजेस. चलो जी, ये लिख लेते हैं. अनदर वन, द नॉन लीनियरिटी ऑफ द थर्मिस्टर, जो उसका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर रिलेशनशिप है, वो एविडेंट है फ्रॉम द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज कंसिस्टेंटली विद द लीनियर ट्रेंड बिटवीन द टेम्परेचर पॉइंट्स. ठीक है ना, तो या दैट इज गोना बी इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज.